की सद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि बोल। Hare Krishna. So, dear devotees, Prabhuji's, Mataji's, et encore une fois, merci beaucoup pour la présence de nos weekly satsang. Et la fois, je peux dire, certains qui demandent comme ça, demandent Mataji, Shudira Rasa, pour faire classe. Alors, vous me demandez, il est vrai qu'il mange une grande soirée, il est intéressant pour Jésus, mais évidemment, il est fatigué quand il était, alors, right, il ne peut pas vous faire. Ok? So, otherwise, tu peux faire Mataji, il fait classe. We can still try next week. No, she's, you know, Okay, she has so many arrangements to make. Oh, Krishna. She won't be able to make it. Yeah. Hare. Yeah. So, we are going to sing a very beautiful bhajan, as usual, starting Prabhu Halori Swami Radha Madhav. No, we chanted Radha Madhav. Maintenant, c'est Mama Mana Mandire. Un très joli Vaishnava bhajan. Et Srila Bhaktivinoda Thakur qui donne nous sa bhajan. Alors, c'est une occasion pour nous. But then just to remind them about Bhaktivinoda Thakur, who is. Alors, tout connaît c'est qui Srila Bhaktivinoda Thakur? C'est qui Srila Bhaktivinoda Thakur? No? Alors, the pioneer of the Krishna consciousness movement. Alors, Srila Bhaktivinoda Thakur, vous trouvez que nous, ban Vaishnava Sampradaya, de ban Vaishnava Acharya, comme on peut aller, avec des darshan qui nous fait, nous, Guru Parampara, non? Alors, quand nous commençons ça, nous avons Srila Prabhupada, Srila Prabhupada sur Guru Maharaj, c'est Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Après nous avons Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Après ça, nous avons Srila Bhaktivinoda Thakur. Maintenant, Srila Bhaktivinoda Thakur, lui-même, déjà, c'est le papa de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj. Ok? Et puis, après, nous avons Jagannath Das Babaji Maharaj. Après, nous avons 6 Goswamis of Vrindavan. Alors, Srila Bhaktivinoda Thakur, comme on dit, c'est déjà un magistrat par profession. Un magistrat. C'est n'importe pas qui s'en a. Dans la société, quand on dit un magistrat, nous connaissons le statut dans la société. Mais malgré ça, malgré les temps qui pas si trop permettent, enfin, bien dire, mais ils balancent sur les temps d'une façon comme un professionnel et ils donnent sur les temps pour se bhakti aussi. Et vous trouvez la quantité de kirtan qui est écrit pour nous, même quand nous sommes Gaurarti. Gaurarti aussi, c'est la Bhaktivinoda Thakur qui est écrit de nous. Alors pour nous, il est important que nous chantons ce bhajan et nous comprenons la signification, le meaning. Parce que comme ça, il devient bien, d'une façon pour aller, facile pour nous comprendre c'est quoi Bhakti, c'est quoi Bhakti. Alors, nous sommes capables de causer longuement chez la Bhaktivinoda Thakur, mais en bref, parce que sinon, alors je gagne l'idée, c'est qui chez la Bhaktivinoda Thakur? La famille. Alors, la famille déjà, oui, comme on peut le dire. Alors, chez Bhaktivinoda Thakur, ils mettent beaucoup d'emphase au preaching, beaucoup d'emphase au preaching, et ils tiennent son propre magazine qui s'est écrit lui aussi. Mais comme je dis aussi, dans nos parampara, ils donnent beaucoup l'importance à ban shastra, book distribution. Okay? Alors, book distribution, déjà, elle a commencé dans quelle époque? Après, Chaitanya Mahaprabhu, il finit, termine son passe-temps, il allait, la Chaitanya Prabhu, il donne instruction à ban prochaine génération. Alors, la prochaine génération, c'était qui? Srila Narottam Das Thakur, Shyamanand Pandit, okay? Srinivas. Alors, ces trois-là, c'était the next generation. Alors, ban là, je commence à faire beaucoup de distribution. Et là, vous trouvez qu'il est toujours, till date, il peut faire beaucoup de distribution. C'est très important. Shastra, on appelle ça. Alors, comment nous avons dit c'est surtout, nous avons causé pendant un temps, 2 ans, 3 ans. Mais les gens qui écoutent après tout envolé. Mais quand il y a un shastra sur la case, on écoute, il va assiser, il décide, Krishna Devi, on rentre sur les quais, il dit, allez ouvrir, Bhagavad Gita, ouvrir lire. Ouvrir Srimad Bhagavatam lire. Et là, qui dit que moi, je dis, nous préférons que Srila Prabhupada même explique à une personne qui nous peut expliquer. Qui nous peut dire, un petit livre de Srila Prabhupada, On the Way to Krishna. Il y a combien de semaines, combien de mois il finit par passer, nous pouvons causer.
Ok? Alors si tous les jours la case va 6 heures là, ça fait cause là, chez la pauvre, alors il est important qu'il nous donne l'importance à nos bandes Shastra et voilà un peu le pionnier de book distribution, on est dans sa age of Kali et aussi bien dire dans sa siècle. Alors on cause 19e siècle et 20e siècle qui nous étaient alors chez la Bhakti Thakur une grande contribution là. Quand il y a des créations livres à peu près. Beaucoup, il y a des films. Oui, beaucoup. Hare Krishna. चलिए हम लोग गाते हैं ममा मन मंदिर ममा मन मंदिरे रानिशी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी ममा मन मंदिरे Krishna Murari, Shri Krishna Murari, Bhakti Preeti Mala Chandan, Bhakti Preeti Mala Chandan, Bhakti Preeti Mala Chandan. Tumi niyo hai niyo, nitya nandan. Tumi niyo hai niyo, nitya nandan. Jivan marana tava puja nivedan. Jivan marana tava puja nivedan. Sundar hai manhari, sundar hai गोलोकानंद भगवान की जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदी हरि। तो अभी ये भजन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे. Nous vous guettons sur translation, très très intéressant.
Je te rappelle कि भजन Lucifer semaine passée क्या गाए थे गत सप्ताह? हाँ, तो we were glorifying भगवान श्री कृष्ण, the different features of भगवान श्री कृष्ण. कौन सा भजन था? क्या गाए थे हम लोग? हाँ, जय राधा गिरिवरधारी. तो c'est pour chanter la case après. उनसे माताजी? Oui, très bien, जय. तो ये दूसरा वाला है आज मम मन मंदिर. तो यहाँ पर what is Srila Bhaktivinoda Thakur? What is the request from Srila Bhaktivinoda Thakur? So we're going to read the translation. So mama mana mandire raha nishi na nishidin. तो यहाँ पर है कि please abide in the temple of my heart both day and night. विजय भगवान श्री कृष्ण reste dans le cœur quand? Tous les temps, on va dire qu'il y a des jours, qu'il y a la nuit, reste dans le cœur. Jai Ho. 24/7. O Krishna Murari, O Shri Krishna Murari. Maintenant, ce premier couplet, Bhakti Priti Mala Chandan, Tumi Niyo Heniyo Chitanandan. Alors, ici, nous peut dire qu'il nous donne Bhagwan quoi? Puja Nivedan. Life or in death. Alors, que ce soit qu'il nous peut vivre, nous peut mourir, nous peut souffrir, I worship you with these offerings. Ça veut dire nous peut offrir Bhagwan quoi? Tout ça va différents paraphernalia que nous dit là. Nous peut faire Bhagwan pushpa, nous peut faire Bhagwan so mala, nous peut donner chandan. Et finalement, en une façon, nous peut donner nous-mêmes à Bhagwan. Nous peut faire ça, nous peut servir Bhagwan. The surrendering. Alors, so in life or in death, I worship you with these offerings, O beautiful one, O enchanter of the heart. Alors, un très joli nom pour Bhagwan, c'est Manohar, Manahari. Bhagwan, हमारे मन को हर लेते हैं. C'est comme ça, il y a différents noms pour Bhagwan. Qui fait nous appelle Bhagwan, nous dit Hari. Hari, से मतलब की वजह जो हमारे पूरे जो अमंगल हैं, हमारे अमंगल को हर लेते हैं, इसलिए भगवान जी को हम लोग हरि कहते हैं. Alors, सर्व अमंगल हरे इति हरि. Ça veut dire quand भगवान के लिए fait aller, il tient tout ça fait qui pas bon dans la vie, amangal, tout ça fait qui innocent, tout ça fait une signification, il pas à peu près. Il fait pas des 5 parce que les représentants qui nous peut donner tout nous van indriya à भगवान. Et pas oublier tout le temps nous dire non. C'est quoi bhakti? Bhakti qui veut dire? Bhakti veut dire dévotion, oui. Après, nous offrir le bon sens, nous mettre le bon sens dans Bhagwan sous seva, ça même ça. Alors, à travers ces 5 giwik qui nous offrent Bhagwan de Arti là, les symboliques qui nous peut offrir tout le bon sens, le bon indriya. Alors, semaine passée aussi, nous dit ali, non? Alors, c'est quoi? Rishikesha, Sevanam Bhakti Ruchyate. Alors, nous offrir tout le bon sens de Bhagwan sous seva. Alors, quand on dit tout ces détails-là, nous pas réussi explique tout en détail, mais au moins aujourd'hui, on comprend des worship qui sont signification. À ce qui fait, nous faire autant arti dans la journée. Combien d'arti nous fait dans une journée? Quelqu'un peut dire? 6. Problème fini dire là. Combien dire? 6. Maintenant, dit 7, problème dit 6. Allez nous compter. Premier arti, il a nous commencé. 4 comment on appelle ça arti là? Mangala. Ça aussi, il est symbolique ça. Comment on appelle ça? Nitya Lila. Aussi on appelle Ashtakaliya Lila. Ashtakaliya qui veut dire Ashtakal. Dan din, dan na journée. Comme prahar है ना, comme pahar nous dit pahar. Prahar कहते हैं 8 प्रहर होते हैं. With dans chaque pahar के ना भगवान fait une lila. Alors tout ça van आरती qui nous peut faire là, nous peut honorer ça van lila de भगवान. ठीक? Il n'est pas à peu près ça. Et normalement, dans chaque arti, il y a un bhajan spécifique qui nous est supposé chanter. Mais dans Gaur Arti, nous chantons. Qui nous chante Gaur Arti? Qui nous chante? Qui bhajaya? Jaya Gauracha. Gamate da Mangal Arti qui nous chante? Samsara Dava. ठीक? और de cette façon-là. Mais sinon, si vous êtes dans normalement, Samsara Dava, ça c'est Guru Shtava, nous chantons pour nos gurus. Mais normalement,
comme dans Vrindavan, là-bas, santé, c'est Vibhavari Shesha, Aloka Pravesha, Nidachari Utra Jiva. Mais Maurice n'est pas santé, mais normalement, devant le temps, c'est tout Vrindavan, ou aller là-bas, dans l'autre sens. Alors, il dit comme ça, Mara Virahe Giridhari, इसको कहते हैं विप्रलंब भाव मन गोपी की भाव है विप्रलंब भाव विप्रलंब भाव की वजह in the mood of separation. So gopis are suffering due to what? भगवान जी के विरह में वो लोग दुखी रहते हैं ना, they are separated from भगवान. पर इस मायावी संसार में सब लोग क्यों दुख में है वो लोग? Banji Munda Saleh Muna qui va bana be souffrir. Parce que bana oublier Krishna, they are suffering out of forgetfulness. Il y a des différences là. Il paraît là non? One is suffering due to separation from the and second one is due to forgetfulness. हाँ माता जी. Aussi séparés, sinon les deux pour nous non? Pour nous, Pas forgetfulness and separation. il dépend. Si on peut pratiquer la vie dévotionnelle, nous devons causer en général pour les mondes matériels, les gens qui finissent oublier Krishna. Et pour balancer dans forgetfulness. Et pour nous, effectivement, ban sadhak, sadhavi, nous pouvons envie qui nous gagne Bhagwan sur bhakti, sur Shuddha bhakti. Alors là-dedans, pour nous aussi pareil, pas oublier que nous pouvons faire des efforts, quand nous venons top et à la fin nous filons, on envie de pleurer. Quand on peut écouter classe, on peut faire un kirtan, ou bien quand, et puis en même temps Krishna peut réciproquer, on peut sentir qu'il a envie de pleurer parce qu'il y a une séparation. Ou puis envie avec Krishna. Mais là, comment on sortit depuis le mandir ou rentre dans le métro, c'est pas dans le transport, puis aller, on finit oublier Krishna. Ou on rentre dans le monde maya. Alors pour nous, c'est que Mataji dit, il y a une façon pour aller, Mataji a raison. Mais ça, c'est tout le monde qui pratique la vie dévotionnelle. Mais une personne qui ne pratique pas la vie dévotionnelle, il n'est pas pour sentir ça. Alors, il est dans l'ignorance totale, il est dans forgetfulness. Alors voilà, ça veut dire, nous disons ici que the waters of the Yamuna river cascade incessantly from my eyes in your separation, O holder of Govardhan Hill. Ça veut dire ici, Giridhari, Bhagwan, alors à cause Bhagwan par là, un bandévo surtout, Chaitanya Mahaprabhu aussi, c'est dans le bhav là, Vipralam bhav. Pleurer, il y a encore pleurer. Un Dieu Mahaprabhu qui a pleuré, un Dieu qui a pleuré sur l'homme, comment couler? Couler l'eau, sur l'argent comme ça, non? Dieu Mahaprabhu qui a pleuré, non. Sorti pour des physiques. Autant tu peux pleurer, pression. De la façon là. Ça ne va pas capable d'imiter ça. Ça c'est vraie lamentation. Ça c'est Vipralam bhav. Et puis, pour conclure, Bandhana Gane Tava Bajuka Jivana Krishna Murari, Shri Krishna Murari. Alors ici, conclusion, maintenant qui peut dire, May I pass my life absorbed only in songs of your praise. Alors ça aussi c'est une façon qu'a fait Bhagwan sur Bhakti. Quand tu gagnes l'occasion où sent Bhagwan Subhan Bhajan. Ça aussi pas bien Kirtan, c'est une façon de seva, de Bhakti ça. Alors voilà, may I pass my life absorbed only in songs of your praise, O Krishna Murari, Shri Krishna Murari. Srila Bhaktivinoda Thakur ki, Jai Guru Srila Prabhupada ki, Gaur Brahmanandi. Alors voilà, ça c'était un autre Vaishnava Bhajan pour vous autres. Alors combien de Vaishnava Bhajan nous finissons à apprendre là? Il y en a un peu là, nous faisons depuis, nous pouvons faire classe. Prabhu, nous avons fait l'examen, nous. Alors, comment Prabhu, tu peux expliquer, nous continuons avec nos classes. Alors, toujours on the way to Krishna. Et quand Prabhu mentionnait qu'il y a un problème qu'il peut trouver dans le monde, il vraiment, il est visible, nous peut trouver. Comme il y a des problèmes, la guerre peut dérouler. Oui ou non? Oui. Mais à ce bandévo, ban sadhavi, qui nous a fait? Qui nous pense? Nous avons fatigué dans la tête? Non. Alors qui conseille chez la Prabhupada de nous dans une situation comme ça? Parce qu'il n'y a pas capable de sentir influencer les gens qui passent trop beaucoup de temps dans le portable, social media, puis ils disent aïe, qui peut arriver dans le monde, le côté, il y a la guerre entre Pakistan, l'Inde, il y a la guerre, comme on peut dire, de la Russie, l'Ukraine, il y a la guerre entre Iran avec Israël, mais qui peut arriver? Il y a des gens qui disent tracas. Il y a tracas? Prabhu dit non. Ça veut dire nature's business to give kicks in the form of
Threefold miseries. Nous disons, la semaine passée, et Prabhu mentionne, nous tu fais ça, ces bouts-là. Dit bon, nous faisons une petite révision. Ça nous appelle Adi Adhyatmik, Adi Bhautik, avec Adi Daivik Pida. Une misère qui tout le monde passe. Mais c'est qui nous peut faire avec ça? Nous cassons la tête à cette heure. Alors, maintenant, Srila Prabhupada qui dit en 1975, Srila Prabhupada, that morning walk, il dit, elle nous a fait très très important à ce disciple et un message très important pour nous tous, pour les personnes qui peuvent suivre. Vous voyez, bhakti, sadhana, bhakti, bien important. Alors, regarde bien. Moi, Prabhu mentionne ça, je ne peux dire ça pour ça. Ça, c'est ever fresh, evergreen instructions que Srila Prabhupada nous donne. Regarde bien, Prabhupada qui dit, instead of contemplating what will happen to this world, au lieu que vous pensez qu'il peut arriver ça les mondes là. You have got a short duration of life. Vous l'avez bien courte. C'est 50, 60 years. Combien de temps nous pouvons vivre? Nous ne connaissons pas. 50, 60 ans. You chant Hare Krishna and go back to home, back to God. Il dit, vous chantez Hare Krishna, Hare Krishna. Pas perdu le temps qui vous déroule dans le monde. Après qu'il Srila Prabhupada peut dire. Don't consider what will happen to this world. Pas fatigué ou qui peut arriver dans le monde. Il n'a pas dit, trop casse la tête qui peut arriver. Quand on pose la question, qui vous a fait? Non, il ne pas faire. Vous avez fait des affaires? Ou pas vous capable? Vous perdez le temps. Alors, nature will take care of it. Il a nature, prakriti, il a Bhagwan, so, Bhairanga Shakti, Maya Shakti will take care of it. She's going to kick. You don't puzzle your brain with these thoughts. Beaucoup de fois, nous perdons beaucoup de temps. Et quand on a la tête là, on a fait qu'il pas besoin encore rouler là-dedans, nous l'énergie, it drains out of energy, il tient nous l'énergie. À nous perdre nous le temps. À cause de ça, peut dire, you don't puzzle your brain with these thoughts. Okay? You utilize whatever time you have got in your possession and go back to home, back to God. Tigit le temps qu'il y a là qui vous a fait. Viens faire Bhagwan se seva tranquille, pas perdre le temps. You cannot check it. Ça me dit, qui nous a fait? Nous a fait qu'est-ce faire? Ou quand l'arrêt ça la guerre là-haut, mais ou pas trop perdre le temps. Et là dit mon réponse là de même. On dit on appelle les autres mental, ça me là a dit adhyatmik pira la tête là, autres mental mais c'est tout aux autres. C'est ayo demain c'est pas la guerre, ayo pas pour un problème ben. Pour notre pas paniquer la guerre mondiale, pas pour gagner manger, pas pour gagner boire, battre, pas pour tout ça là. Dis-moi que moi qui tracas, il commence à avoir de dépression. Mais qu'est-ce que ça fait? Faut lui ça la mettre moi là. Sur mental, ça me c'est adhyatmik pira. Alors ça nous a comprendre. You cannot check it. Best thing, voilà. Best thing, Srila Prabhupada nous, is that you mold your life and go back to home, back to God. Comment écoute la porte du Srila Prabhupada? Go back home, back to God. Vous savez qui nous a fait? Engage-nous dans ce seva. Parce que comment on parle de Bhagwan? Comme ça, non? Il faut faire service pour il faut pratiquer tout dans la vie. C'est tout ça qui les temps qui est dans là. समय की बर्बादी मत करो, pas perdre le temps bien tigité là. Nous pas connaître quand écoute nous bien finir aller. À cause de qu'il y a important qui nous fait, tigite le temps qui est là, nous engage dans Bhagwan ce seva. Toute longue la vie, pas oublier, ne perdre le temps non. Ne perdre le temps, pas perdre le temps. Les enfants qui nous fait jouer. Oui, Jamani qui nous fait dormir. Après, quand il est adulte, ramasse-casse, l'amusement. Oui, ramasse-casse, des enfants, tout ça nous fait. Non. Après qu'il est arrivé. Et quand il vient qu'il est arrivé. Quand il vient qu'il est arrivé, nous commençons à pleurer. Non. Non, c'est de pleurer. D'ailleurs, si nous tirons un petit peu les temps, nous n'avons qu'à oui, mais les temps n'a pas. Alors, c'est bien important, ne pas perdre le temps dans les affaires inutiles. Alors, best thing is that you mold your life and go back to home, back to God. Because, qui fait, people will go on with a rascal civilization. Ça, c'est Srila Prabhupada. Typiquement, Srila Prabhupada, c'est comme ça. Parce que Dieu, ça pas une civilisation qui est là. Prabhupada se fait là. They are mad. Dis moi, ils viennent fous. C'est un Prabhupada qui fait qu'il là. Misdirected civilization. Misdirected civilization. Mais quand nous savons ça, je ne pas trop comprendre. Mais quand nous savons un terme, comment dire, simple, on dit, ils viennent fous. Mais voilà, ça nous appelle ça rascal civilization. Alors, dis-moi pour toujours rester dans sa qualité civilisation là, et là, qui peut arriver,
natural consequences will be there. Ça veut dire la nature pour faire ce travail. Prakriti pour faire ce travail. You better take advantage of whatever time you have got and become fully Krishna conscious and go back to home. Comme écoute, je vais parler de là. Go back to home, go back to Godhead. Comme écoute, la Prabhu dit, il y a 4 coups. C'est une conversation, pas même 2-3 minutes. Comme écoute, il dit, pas perdu le temps. Hare Krishna. Alors, ça c'était un suivi, un petit peu de ce que Prabhu mentionnait. Alors, je pense juste qu'on ajoute ça. Ok? Alors, ça, je pense que vous donner un petit peu plus de motivation pour nous comprendre qu'il est temps de faire pour PRD. Vous venez un vrai time manager, ça m'appelle time management. Comment nous le temps supposé passer? Comment nous moldons nous la vie? Comment nous préparons nous la vie? Dans le jour, combien de temps il y a? 24 temps. Nous disons 24-7, nous pensons Krishna. Oui, comment nous pouvons faire? Il y a différentes façons pour faire. Même dans le travail aussi, quand on peut travailler, nous disons au mental, il toujours peut penser beaucoup. On ne se prend pas, on ne se prend pas, pensez toujours. Alors, très très important, ok? Alors, un dimanche, il faisait travail, il n'a pas fait non, il travaille 8 ans. Ou quand travaille 8 ans, non. Un dimanche, travaille 8 ans, il a commencé 8 h du matin jusqu'à 4 ans. Take, de là, qui nous dit 8 h dormir, manger, boire, prendre compte l'écho, l'exercice, si pas, on va connaître moi. Faire yoga, faire tout cas l'exercice, il n'a pas fait Zumba, tout ça, là, ça dit un peu de la mode. Ok, faire, pas de problème. Mais ici, dans le temps, nous donnons le whole package ici. Comme il fait arty, nous pouvons faire spiritual Zumba ici, je tout peux danser là. Vous avez payé dans le gym là-bas, non? Là, même si vous venez ou assister arty, vous finissez, brûler comme calories là, si vraiment nous devons participer, taper la main ou danser, faire une rituel pour Bhagwan. Mais tout ça là, peut gagner dans cadeau, mais nous pas les profiter. Nous on vient payer gros cash. Après de là pour notre santé peut dérouler là-bas nous pour danser. Mais fini, vin faire une pour Bhagwan, ou la santé pour être correct. Alors, dans cette façon-là, pour nous dire 8 h temps, nous pouvons travailler, 8 h temps, nous pouvons get nous l'école, nous pouvons dormir, manger, boire tout, mais ça doit être 8 h temps qui reste là. Ça doit être 8 h temps là qui nous fait. Ça doit être 8 h temps là qui nous fait. Il y en a combien de temps là? 24 temps, nous disons non. Nous finissons de manger, boire, dormir. Tout le monde a envie ça. On veut travailler pour que ça finisse correct. Mais 16 temps, il y en a quoi 8 temps là? Ça 8 temps là, c'est quoi Krishna? C'est ça the Vedic way of life. Ou bien rappelle, une fois tu as His Grace Sankrishnadas Adhikari Prabhu là, tu fais classe, il expliquait. Il disait que vous pouvez suivre la vie dévotionnelle, vous avez besoin de travail. Vous avez maintenir l'école, vous avez prendre en compte la santé, mais c'est moi, the Vedic way of life, il est là. Pour travailler, c'est 8 temps. Non, il y a des gens qui peuvent travailler 12 temps, 15 temps, 16 temps pour eux. Mais qui vous fait tout ça là? Ça nous dit non. Des gens dans l'élection, t'as dit. Dans illusion. Ça nous appelle ça, Atyahar Prayasascha. Nous faisons trop beaucoup prayas. Nous perdons le temps. Vous entendez tout dans le dire, des gens disent, mais bravo. Tout le long de la vie, je travaille comme un bœuf. Je ne dis pas dire, il travaille comme un bœuf, mais c'est moi quand je suis dans la banque, je me casse. Pas de récit économiser. Mais qui fait? Est-ce que nous, la vie, il fait juste pour ramasser casse? Mais ça me dit, aujourd'hui, il finit, je n'ai plus qu'une définition de la vie. Lakshmi est important dans nous, la vie, pour un certain temps. Nous besoin Lakshmi. Mais est-ce que nous l'avons besoin de finir juste de galop de casse? Galop de casse, pas bien, mais si vous galop de Krishna aussi, Lakshmi Maharani pour ne nous s'occuper pas. Secret là, ça aime ça. Galop de Krishna, vous trouvez là Krishna qui vous fait pour. Ou pas besoin de mettre ça quand des efforts là. Ça me quand il est préas là, pas besoin de faire. Alors, nous continuons. Ça veut dire, bon, que nous s'arrêtons? There may be some difficulty. Difficulties? Après Sarva Dharman. Ah, Sarva Dharman, oui. Nous Tu finis à Habuta, non? Avant l'autre verset là. Oui. Juste là où on dit. There may be some difficulty in surrendering? Voilà. Oui, ok. Alors, c'est ça. Ici, nous sommes une cause de mad civilization. Une civilisation. Vous trouvez dans la conversation de Srila Prabhupada là aussi. Srila Prabhupada mentionne rascal civilization. Ici, dans le livre, Srila Prabhupada écrit
These people are mad, right? Alors, we are under the stringent rules of material nature. Nous en bas, qui s'appelle la nature. Quand on dit material nature, c'est quoi? Bhagwan se divya shakti, ça. Devi Shagunamayi, Prabhu fait dire là. Bhagavad Gita, chapitre 7, texte 14. Combien de fois, chaque semaine, nous répétons ça shlok là? Devi Shagunamayi, Mama Maya Drutya. Mame vaya prapanjante, Maya metam tarantite. Ça veut dire कि भगवान से शक्ति même ça सतोगुण रजोगुण तमोगुण ça maya shakti là c'est pour भगवान même ça mais seulement si l'envie reste de l'autre côté nous pouvons toujours souffrir alors nous devons choisir qui côté nous pour rester un problème soit nous restons dans le chemin bhakti nous toujours avec Krishna conscious avec भगवान soit nous venons tomber dans maya alors le choix est pour nous décider qui ont envie de faire alors there may be some difficulty in surrendering to the father of this body, for he has limited knowledge and power. But Krishna is not like an ordinary father. Là, nous because le papa biologique et Bhagwan, Shri Krishna, qui est même le papa de tout. Alors, ici, Krishna is unlimited and has full knowledge, full power, full wealth, full beauty, full fame and full renunciation. Alors ça nous expliquer ici, ça c'est une définition bien importante ça. Quand on dit Bhagwan, ça thème Bhagwan là, nous servir pour beaucoup de personnalités ça. Vous capable de servir, pas de problème. Mais qui ça là, quand nous dit Bhagwan, cette définition même, nous dit define, who is Bhagwan? Ah, nous faisons une petite révision. Quand une personne lit bien faux, vous avez dit qu'il y a un bal. Comment on appelle, comment on dit dans le sanskrit ou dans le hindi? Il y a balvan. Alors, balvan, जिनके पास बल है. À cette personne qui a beaucoup de compassion, qui montre beaucoup de daya, nous disons dayavan. Non? Parce qu'il montre qu'il a compassion. ठीक? Alors, dès l'exemple, il donne là. Ok? assez Bhagwan. Une personne qui n'a Bhag qui veut dire maintenant l'opulence, pas Bhakti, Bhag. Hein? Bhag veut dire celui qui n'a l'opulence. Qui l'opulence? Là, on peut causer là. Bhagwan, qui nous fait dire là? Bhagwan is unlimited and has full knowledge. Il a tout gyan. Full power, Shakti. Full wealth, Aishwarya. Full beauty, ça nous dit Shri. Full fame, ça nous dit Yash. And full renunciation, ça nous dit Vairagya. Alors, il y a une définition de Bhagwan dans Vishnu Puran. Alors, c'est qui Bhagwan? L'âme qui nous explique, nous dit Aishwarasya Samagrasya. Viryasya Yashashaha Shriya Gyan Vairagyavischapi Shannam Bhag Itingana. Bhag veut dire l'opulence. Bhagwan c'est qui? C'est qui dans sa 6 l'opulence là. Il y a une full Samagrasya. Alors Aishwarya, il implique riche. Tout ce qui est dans le monde, pour que ça n'a ça. Pour Bhagwan ça. Pour nous, non, il n'y a pas de nous dire. Nous donnons des coquins. Nous pouvons servir tout ce qu'il nous donne. Sur l'oxygène, sur l'air, tout bonne plante. Il nous donne, nous pouvons servir, nous pouvons faire tout. Après, nous pouvons dire pour moi ça. Mais tout pour Bhagwan, ça, nous coquins, nous pouvons servir, nous pouvons dire pour nous. Non, tout c'est pour Bhagwan. Take, alors, Aishwarasya, Samagrasya. Samagrasya veut dire in full, in totality. Alors, Aishwarasya, Samagrasya, Viryasya. Plus fort qu'ils ont tout. Je donne l'exemple, tu es en train de dire, non, mais t'as dit qu'à assise là aussi, non, c'est assise. Ok? Alors, Viryasya. Quand on trouve Bhagwan, quand il dit bien, tu as fait ce passe-temps, comment tes enfants aiment, l'âge de 7 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, Govardhan. Avec ce petit les doigts. Hein? Alors, ça, qui ça a plus fort que lui? Ça veut dire, c'est Viryasya. Aishwarasya Samagrasya, Viryasya. Après, on dit Yashasha. Yashasha veut dire ce qui est plus populaire, plus famous. De nos jours, à l'époque, nous trouvions un acteur, actrice, qui fait lever là, il est populaire pour un peu les temps. Après, c'est un temps, tout le monde me lit, il n'est pas cause de ce côté. Alors, je reste populaire, on tire les temps.
Mais Bhagwan, il reste populaire pour l'éternité. Qui fait autre aujourd'hui? Bhagwan se yash kot tete. C'est tout quand nous cause Bhagavad Gita. Qui fait là tout ça dit mon intéressé pour lire Bhagavad Gita? Alors je te pose la question. Quand on va regarder l'internet, quand c'était version de Bhagavad Gita qu'il y a, on retrouve Bhagavad Gita dit pour tout le monde, c'est vrai. Pas pour aucun, c'est pas une région spécifique ou un groupe personne spécifique. C'est pour tout le monde, oui. Mais vous trouvez dans les western philosophes, surtout ils écrivent, ban purport, ils écrivent, ils décrivent Bhagavad Gita. Qui fait? D'après eux. Parce que c'est ça, on peut dire, c'est Bhagwan, so yash ça. Bhagwan, c'est is the most famous. Alors, à travers Bhagwan, je pensais que je pouvais être un peu plus populaire, aussi, quand je pouvais quelque chose de Bhagavad Gita. Mais si la Prabhupada qui dit, qui s'en a expliqué Bhagavad Gita? Qui s'en a bien, d'une façon qualifiée pour expliquer Bhagavad Gita? C'est une personne qui donne sous la vie à Krishna. Les mêmes qui vous expliquer de nous Krishna. Une personne qui peut faire casse, peut faire business, vous ne pouvez pas expliquer Krishna? Non, il carrément trouve faire business. Mais je ne peux pas expliquer comment vous gagner Krishna. Alors c'est ça les dire bien pour autant qui vous peut lire. Après ça nous met de l'emphase, quand nous lisons c'est, tu t'en lis Bhagavad Gita, Yatharu Asiti. Moi, c'est une version créole. Bhagavad Gita, comment il était? Il a dit pareil original. Alors c'est ça, un bhakta, Srila Prabhupada, un Shuddha Bhakta, qui nous vient de nous ça. Alors, vous avez connu qui version Bhagavad Gita aussi vous pouvez lire. Sinon, ou pas pour comprendre Krishna. Pas oublier Bhagavad Gita, il dit aussi déjà des gupta ça. Un secret ça. Les Raj Vidya, Raj Guhyam. Guhyam veut dire the topmost secret. Mais un secret, n'importe qui s'en a de nous ce secret-là. Non. Mais il faut venir ou assiser ou soumettre ou vivre la vie comme ça. Ou pourquoi aller prendre un livre ou lire, avec des gens qui comprennent Bhagavad Gita? C'est impossible. C'est un rahasya. Si nous sommes capables, écoute, classe, c'est une personne qui ne peut pas suivre ce qu'on. Mais qui version vous donne lui? C'est qu'il n'apprend. Mais est-ce qu'il n'est pas un dévot? Est-ce qu'il est capable de nous bhakti? Parce que pas oublier, la crème de votre Gita, c'est quoi? What is the essence, the sar? Gita sar क्या है? Bhakti. So if he is not, sa personne n'a pas un dévot, il peut faire un dévot? Non. Ça me pas de dire combien de versions Bhagavad Gita ont gagné dans les passés, combien de fait dévot, combien de dévots ont gagné? Pas gagné. Mais quand Srila Prabhupada, sur Bhagavad Gita Asiti, il commence à distribuer entier les mondes. Entier les mondes, il commence à danser et faire Harina. Pour tout que trouver. Hare Krishna, 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 Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. C'est comme ça que nous sommes capables de mesurer, nous sommes capables de comprendre que Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, comment l'INA, ça l'effet spirituel là, il fait nous fil qui vraiment nous faisait faire bhakti. Sinon, non. Alors ça veut dire que vous pouvez relire une autre version, ou vous avez une autre version, pareil. Dans Ishopanishad aussi, il explique ça. Il dit que quand vous lire quelque chose qui n'est pas connecté avec Bhakti, ou vous comprenez une autre affaire, ou vous avez une autre version, et si vous pouvez écouter version Bhakti, ou vous avez une autre understanding, une autre compréhension. Alors ça dit bien pour autant que quand nous associons, nous écoutons pour ce qui va nous développer expliquer. C'est là que vous pouvez développer. Parce que dans Bhagavad Gita, nous mettons Krishna au centre. Mais dans Bhagavad Gita, dans la version, pas de causer le Krishna, pas donner l'emphase de Krishna. Et dans donner beaucoup l'emphase de karma yoga, je prends un seul aspect je peux causer. Une partie peut mettre beaucoup l'aspect de dhyan yoga. Mais en totalité, Bhagavad Gita, quand on comprend tout, c'est Bhakti yoga. Alors chacun a sa version, pour nous expliquer, alors nous devons faire bien attention. Alors ça c'est Bhagwan, so yash. Alors comment nous dire la définition de Bhagwan? Aishwarasya, Samagrasya, Viryasya, Yashashaha, Shriya. Shriya veut dire c'est qui est le plus joli. Alors nous avons Bhagwan dit sur Vigra. Nous avons Shrimati Radharani, nous avons Bhagwan Shri Krishna. Il y a quelqu'un qui a une plus jolie que les autres? Alors une question à ce niveau, nous allons mettre une pièce là. Qu'est-ce qu'on a plus joli? Krishna plus joli ou Shrimati Radharani plus joli? Alors il n'est pas venu dire tous les deux là, une seule ou vous en dire là.
Allez nous guetter. Ksanja Krishna plus joli, lève la main. Ksanja Krishna plus joli, lève la main. Allez, Mataji pour moi aussi, lève la main. Allez, Ksanja Radharani plus joli. Mataji lève la main encore. Mais ça, c'est un dévot qui comprend de ça, l'essence. Parce que si vous regardez bien, il y a une différence entre Radha et Krishna. Il y a une différence. Il y a des gens qui viennent faire différence avec Krishna. Ok, Michi, ça, Radharani, Madame, ça, c'est pas Tifi, ça. Là même, nous finissons faire. There's no difference between Bhagavan, Shri Krishna and Srimati Radharani. Parce que Srimati Radharani, c'est qui? Bhagavan, Shri Krishna, sur Hladini Shakti. The pleasure-giving potency. Alors, il y a une différence. Je ne finis comprendre l'essence pour vous. Allez, Krishna. Boli Shri Radha Golo Karanda Bhagavan qui? Alors, quand nous causons là, le Bhagavan se Shri, les plus jolis qu'ils ont tout. Après, qu'il nous dit, alors nous disons écoute, Aishwarasya, bolez ça, mais Aishwarasya, Samagrasya, Viryasya, Yashashaha, Shriya. Maintenant, next c'est Gyan. Gyan veut dire Bhagavan, il a toute connaissance que vous pensez. Alors, et cette connaissance, c'est déjà dans Bhagavad Gita, dans Srimad Bhagavatam, et dans tous ces différents shastres. Même dans Ved aussi, c'est tout pour connaître Bhagavan même. Dans Srimad Bhagavatam expliqué, Vasudeva Paraveda. Paraveda. Topmost Ved, c'est pour nous connaître Vasudeva, nous connaître Bhagavan Shri Krishna. Alors, Gyan. Et puis le dernier, c'est Vairagya. Vairagya, Bhagavan, malgré tout cela, il détaché autour. Nous, tigit, nous, là, nous attachons, nous trappons, nous godés. Et ça pour moi, ça pour moi, ça pour moi. Tigit qui est là, nous mettons. Bhagavan, il y a tout pour lui. Isha Vasham, Idam Sarvam, tout pour lui même ça. Mais ça, Bhagavan, il n'est pas attaché à non. Ah non, il n'est pas attaché. Ça, on appelle ça. Bhagavan is the topmost. Renunciation. Alors, si quelqu'un dit, moi, mon Bhagavan, je dis, ok, on va tester nous un point là. Vous avez 6 bhags en tout là, 6 l'opulence. Est-ce qu'on a tout, wealth, tout dhan, ou même qu'il a, assez, ou même plus joli que tout, mais pas besoin de vieillir. Bhagavan dit, non, never you want to ever fresh, youth. Les tout étant, quand vous êtes l'âge de 15 ans, 16 ans. Et ça me Brahma Samhita expliqué. Advaitam, Achyutam, Anandim, Anantarupam, Adyam, Puran, Purusham, Navayovanam cha. Navayovanam cha. Après, Vedeshu Durlabam, Durlabam Atma Bhakto, Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Alors, même nous, ban Ved, aussi pas capable d'écrire Bhagavan chez Krishna. Parce que Veda, Durlabam. Adurlabam Atma Bhakto. Ban Bhakta qui comprend Krishna. Ved Puran, c'est vrai quand il y a Ved, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise interprétation de comment se fait tout le monde avec qui n'a pas besoin. À cause même d'abord Gita, on explique dans le chapitre 15, Purushottam Yoga, qui va expliquer dans le commencement. Commencement, qui disait il dit que tout ça va connaissance qui nous peut rôder, ça va purushar, dharma, artha, kama, moksha, tout ça là. We have to cut down. Parce qu'il y a ça les mondes là, comment les ressembler, un pied la fouche, qui reflète dans la rivière, de l'eau, il est dans la fouche en bas là-haut. Mais c'est quoi ça pied la fouche là? Ça même c'est all these Vedic knowledge. Et dis-moi si t'en attaché à ça, je te finis reste dans les mondes jusqu'à karma kand, de pas capable de bouger à vers bhakti. Et bhakti c'est quoi? क्या है शुद्ध भक्ति? Comment nous avons fait bhakti? Quand nous avons fait bhakti, il y a différents niveaux de bhakti. Tout le monde peut penser, Prabhu, mal ben sandal pour voir ma tête en tout. Mon bhakti. Avec respect, oui, Dieu n'a pas fait. Mais c'est quoi शुद्ध भक्ति? क्या है शुद्ध भक्ति? Qui Srila Rupa Goswami donne the nectar of devotion? Mataji Pujala, Anya Abhilashita Shunyam. veut dire que quand nous pouvons faire Bhagwan sur Bhakti, Anya Abhilasha nahi honi chahiye. Abhilasha means other desires. कि भगवान जी आप मेरे को ये दीजिए, in return you give me this. No, there should be no abhilasha.
अन्याभिलाषिता शून्यम विजयेहो. Et puis jnana karmadya anavritam, free from jnana and karma, means free from mental speculation and karmakand. Pasifya karmakand, you do karmakand for what? To gain something in return. Mais ce qui n'est écrit, ce que Bhagavan Shri Krishna a fini d'écrire pour Sam ou Gay. Mais Sam Jun Pale comprend. So this is the difference between following rituals and then following bhakti. So anya bilashita shunyam jnana karmadya anavritam anukulina krishnanu. Anukul honi chahiye. It has to be favorably done. शीलनम भक्तिर उत्तमा. उत्तम भक्ति क्या है? जहां पर भगवान जी के लिए हम लोग सेवा करते हैं और भगवान जी से कुछ नहीं मांगते हैं. We don't ask anything. क्योंकि भगवान जी जो देते हैं प्रसाद के रूप में, यू शुड बी हैप्पी. पाल फोर्स ना चाहिए जनो भगवान मो बिजनेस सामेम दोनों सा सुपा दोनों वो प्रियो. तो ये क्या हो गया? तो अन्य अभिलाषाएं हो जाता है. सो दिस इज नॉट शुद्ध भक्ति. सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ भक्ति फॉर डिफरेंट पीपल, बट शुद्ध भक्ति, this is what Srila Prabhupada wants us to come to that level on the Shuddh Sattva platform, so that we can do Shuddh Bhakti. Jagadguru Srila Prabhupada ki. So this is the definition of Bhagavan Shri Krishna. Okay, Krishna is unlimited and has full knowledge, full power, full wealth, full beauty, full fame, and full renunciation. Shouldn't we consider ourselves lucky to go to such a father and enjoy his property? Kisana pupiaji janu. Kemudian Nabi Basil dia, "Bapa nak selalu pinos lah." Nu Bapa saya kisah Krishna. He has got so much opulence. Isi mo jala sikit nu na nu akabari. Krishna David kot mo mo donta buku please kisah. तो बाप कहा कैसी में लूट सके तो लूट नहीं पाएंगे हम लोग. इतना भगवान जी हमको देंगे और देते भी हैं. वैसे रुपा लिया किसी. ठीक, तो आगे बढ़ते हैं. So yet no one seems to care about this, and now everyone is making propaganda that there is no God. तो if you are not giving importance to God, भगवान जी को आप समय नहीं देते हैं, तो बहुत आसान है बोलना भगवान नहीं है. राइट? लोग क्यों कहते हैं भगवान नहीं है? क्यों कहते हैं? किवन जिमुन जब बिना भगवान pasipan kayo na ito wala जय मांगा कुछ नहीं मिला तो भगवान नहीं है. ना तो वैसे ही कोई बोलते हैं नहीं भगवान नहीं है. भगवान क्यों नहीं है? दिखता नहीं, बताओ भगवान का. तो there are several ways of explaining. No? तो किसी को बोलते हैं अरे तेरे भी बुद्धि नहीं है. बुद्धि नहीं है? हाँ बुद्धि है ना. हाँ तो दिखा मेरे को. बुद्धि निकाल के बता सकते हो? हाँ ये निकाल कर देखो ये मेरे बुद्धि है. Can you show? No, you can feel it. It is realized. Right? You can't see with your eyes. Actually, nukato buddhi, nukato ahankar, nukato numan, nukato atma, nukato bhagwan. Non, ne pas vous trouver. Ne pas vous trouver. With your gross material senses, you will never be able to see. इसलिए कहते हैं सब जो इंद्रिय हैं जब सेवा में लगाएंगे कनुफे भगवान से सेवा लल्ला की नुबान इंद्रिय को मोज गए purity, they start getting purified, and when they are purified, Prabhupada says here is Krishna, you can talk to him, you can serve him. La की नुका को मोज को alors मुझे से declare. ठीक, आगे बढ़ते हैं. So no one cares about this, and what do they say? And now everyone is making propaganda that there is no God. Why do people not seek him out? The answer is given in the next verse of Bhagavad Gita. Très important. 7-15. Le chapitre 7. This is the very important shloka. Namam duskrito muddha prapadyante naradhamaha maya parityagyana asuram bhavam ashrita. 4 categories of persons. जो पाप accepter जामे जो पाप भगवान देते. पहले कौन है? दुष्कृतिनो मूढ़. कौन है? Miscreants were grossly foolish. दूसरा है नराधमा. Naradham means lowest of mankind. तीसरा है माया
यया परित्य ज्ञान, जिसका जो बुद्धि है भ्रष्ट हो गई है, किससे? माया से. So what do we see here? Whose knowledge is stolen by illusion. And lastly, asuram bhavam ashrita, and who partake of the atheistic nature of demons. Do not surrender unto me. तो साधारण सी बात है. That's why people are not everyone is looking for Krishna. Est-ce que tout le monde veut avoir Krishna? Non. Mais qui arrive ça même personne là? Ça ça quatre catégories là. Qui arrive vous? भगवान की फेर जरूरत. भगवान जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं ऐसे लोगों से? Mataji, what chapter it says to do with? What chapter it says? Chapter 16. Tanaham jita kruram samsareshu naradhaman. Chapter it says, nous get verset 19. Get 19 écoute. 16-19. मिला प्रभु? क्या है 16-19? Oh, 16-13. Take 13. Tanaham. C'est 13 प्रभु. 16-13. 19 c'est le ça. Non, 16. Deux-moi. मैं ढूंढ रहा आप लोगों के लिए, एक मिनट. Nous avons 15 là, ça m'a pas gagné. Sorry, pour vous le c'est rapide 15 là. Allez, 19, c'est 16-19, je suis bien dit, bon là. 16-19. OK? बोले श्री श्री राधा गोलोकानंद भगवान की जय, जगदीश प्रभुपाद की जय. और की भगवान फेक सबन पे सुनना से. ठीक, पहले फिर से बता रहे हैं, the 4 categories of men who do not surrender to भगवान श्री कृष्णा. पहले कौन है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूढ़ है, grossly foolish. दूसरा कौन है? प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधम, lowest of mankind. तीसरा माया परित्य ज्ञाना, means those whose knowledge have been stolen by Maya, by illusion. And finally asuram bhavam ashritam, जो आसुरी भाव के, बल्कि विश्वी मन qualité démoniaque. तो उनके साथ भगवान क्या करते हैं? तो अभी ये 16-19 में देखते हैं. क्या 16-19 भगवद गीता मिला आप लोगों को? तानहम दिशत क्रूरान samsareshu naradham, same, those who are lowest of mankind. Kshipyami ajasram ashubhan asurisho eva yonishu. Abhi Prabhu ji will read the translation loud for everyone. Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence, into various demoniac species of life. बाप रे, आप लोग सुने प्रभु जी क्या बोले? Those who are miscreants and mischievous, right? And envious. क्या करते हैं भगवान जी? I perpetually cast into what? Ocean of material existence. And what kind of species? Demoniac species. So इनको कहते हैं नित्यबद्ध, eternally bound. निकलना impossible है इन लोगों के लिए. कब निकलेंगे? यदि कोई भक्त की कृपा हो उन पर, तब. Vous avez bien compris? Alors ici, nous trouvons solution et nous trouvons qui peut arriver aussi là. Si bonne personne qui part au-dessus, Bhagwan Shri Krishna sur Bhagavad Dharma qui arrive. आगे बढ़ते हैं. चलिए, so 7:15 हम लोग पढ़ लिए. अब आगे बढ़ते हैं. So in this way, the fools are categorized. Je vous trouvez de Bhagavad Gita, chapitre 7, texte 15. Ce purport, Bhagavan Srila Prabhupada, il explique ça beaucoup en détail, mot pour mot, chaque catégorie, qui veut dire un duskriti. Là aussi, je parle, il met dit en summarized version.
In this way, the fools are categorized. Dans différentes catégories de fools, de imbéciles. Et dans différentes catégories. Alors, il y a un coup qui là pas te expliquer. Et Duskriti is always acting against the scriptural injunctions. Ça veut dire tout ce qui est dans le Shastra inexpliqué, il fait tout ce qui sont en bas là. ठीक? वो लोग बोलते हैं क्या कहते हैं वो लोग rules are made or laws are made for what? Non, la loi qui ne fait pour faire. La loi ne fait pour casser la loi ça. Qui fait mettre la loi pour nous capables de casser la loi non. So rules are made or laws are made to be broken. Ça c'est qui ban ça, ban Duskriti. Je pas les suivre aucune la loi. Ah ben ici dans nos timoristes là, dans nos petits pays qui nous trouvent. Na combien de monde peut faire ce qu'ils ont envie. Je peux suivre ce que Shastra peut dire, même ce que la loi peut dire, je peux suivre. Qui arrive d'autre? Bien sûr, de nos jours, on peut trouver ça aussi comme une impériale. Je vais faire ce que j'ai envie. Ça veut dire qu'il y a un goût un peu plus là-haut. Bana qui peut faire. Malheureusement, il est comme ça. So, Duskriti, those who are acting against the scriptural injunctions. Now, next, the business of current civilization is to break scriptural rules. Allah, c'est là. Zodizu, qui va arriver? What is the business? C'est là. Business of this current civilization. Quel type de civilization? Mad civilization. Or rascal civilization. Pas moi qui peux dire, je ne l'ai pas mentionné. Alors, qui va arriver ici? Is to break scriptural rules. That's all. Votre envie de faire ça même. Faire tout en bas là-haut. Shastra ne dit pas faire ça, non, nous devons faire ça. Pour eux, c'est un peu roulesté. So, by definition, a pious man is one who doesn't. Une personne qui dit pas al compte ban scriptural injunction. Ça, c'est une personne qui peut faire pious activities. Now, there must be some standard to distinguish between Duskriti, an evildoer, and Sukriti, a virtuous man. Alors, le contraire de Duskriti, c'est Sukriti. Now, every civilized country has some scripture. Alors, regarde bien. N'importe qui civilisation, n'importe qui pays qui nous allait, si une personne peut suivre une certaine Holy Scriptures, it may be Christian, Hindu, Muslim, or Buddhist. That doesn't matter. So, this is the greatness of Srila Prabhupada. Nous pas souvent pas converti du monde, non. Mais aussi suivre le Shastra comme besoin. Aussi, que vous venez Krishna conscious. Si vous suivez comme besoin, si vous parlez de mauvaise interprétation, c'est normal, vous parlez de moi, malheureusement. So that doesn't matter. The point is that the book of authority, the scripture, is there. One who doesn't follow its injunctions is considered an outlaw. Ça veut dire, si vous appelez vous un Sanatan Dharmi, vous avez suivre le Shastra. Parce que nous, le Shastra, que nous pas oublier. Nous tapons l'estomac, nous disons, que nous avons l'océan de Shastra. Et nous avons un ciel, oui, un ciel, qu'on suive. Nous avons l'océan de Shastra. Tu t'as dit ça? क्या है? चार वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, आगम मन से तो बन निस्विद्युलन सुइफ साबुकी, South Indians, Samhitas, Aranyak, comment vous finissez cela? But then you'll be attracted towards one. C'est nos guns qui nous est là, nous pouvons attirer qu'un Shastra. Mais vous en suivez. Alors, the Sanatan Dharma, this is the most accommodating Dharma. Most accommodating. Accommodating de quelle façon? Parce que ce n'est pas pour forcer ici. Ici, Dieu, selon où capacité, selon où gun qui est là, ou content lire Shri Ramcharitmanas, lire. Ou content lire Ved, lire. Ou content lire Bhagavad Gita, lire. Ou content lire Upanishad, lire. Mais qu'on peut lire at the end. Quand tu besoin aller, destination un seul. Partout, il dit où, même dans Upanishad aussi, partout. Who is the Param Gati, the final goal? Vasudeva Paragati. À plusieurs reprises, ça aussi nous mentionnait. Le Srimad Bhagavatam a désolé shlok. Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paramukha. Nous disons quoi c'est ça? Vasudeva
परा योग और वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। दिस इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। यू रीड वेदास, परावेदा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। शिवपान कैसी कौन भगवान श्री कृष्ण? वेद में उन पे लेता हूँ शिवपान को। But the problem, you get the tendency to get diverted. The goal is straight. Mais nous commençons à get diverted. The lamb qui commence à nous parler ici, catch the essence of the scriptures. Okay? वासुदेव परामखाः। यजमान जी मुझे प्रभु निवेदित यज्ञ नु, ठीक है, स्वाहा करो, स्वाहा, कोई बात नहीं। पर किसको मिलना है? यज्ञ पुरुष कौन है? वासुदेव परामखाः। इसलिए जितने भी स्वाहा करते हैं बोलते हैं इदम श्री कृष्णाय स्वाहा, इदम कृष्णाय इदं नमः। ये सब भगवान जी की का है, मेरा कुछ भी नहीं है। दिस इज द मीनिंग। तो जितना भी स्वाहा करते हैं सब भगवान जी के लिए जाते हैं। इट ऑल बिलोंग्स टू भगवान श्री कृष्ण। और अन्य जितने भी देवता देवी हैं सबको भी मिलता है। बट हु इज यज्ञ पुरुष? भगवान श्री कृष्ण। शास्त्र ये कंफर्म करता है, ठीक है। अब वासुदेव परा योग। जो भी आप योग करते हैं, चाहे आप कर्म योगी हो, आप ध्यान योगी हो, राज योगी हो, क्रिया योगी हो, पता नहीं कितने कितने अष्टांग योगी है, कितने सारे योगी हैं आजकल। पर हु इज द एम, हु इज द गोल वी वांट टू रीच थ्रू योगा? इज वासुदेव परा योग। वासुदेव परा क्रिया। जितने भी क्रिया कर्म करते हैं, कर्मकांड, उधर भी कर्मकांड जब करते हैं तो हमेशा भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण को बैठाते करते हैं। श्री कृष्ण अर्पणम, सब भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके तभी जो भी पूजा पाठ होते हैं करते हैं। सो कर्मकांड ऑल्सो टेक्स यू टू कृष्णा इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज, हु इज द गोल। उसके बाद वासुदेव परम ज्ञानम। ज्ञान आपको मिलता है ना, सब लोग पढ़ते हैं, पेशाक करते हैं, नेशनल एनसे करते हैं, एससी करते हैं, एचएससी करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी प्रोफेसर सब बन जाते हैं। ये सब क्या है? मैटेरियलिस्टिक और मैटेरियल ज्ञान। किस लिए? ताकि आपको कुछ काम तो मिले ना, थ्रू योर डिग्री, तब आपको लक्ष्मी मिलेगी। पर लक्ष्मी जब मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं? नारायण को भूल जाते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक। तो ये सब किस लिए है? ताकि हम समझें कि जो भी धन मिल रहा है लक्ष्मी माता दे रही है तो भगवान नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। तो दिस इज फॉर भगवान श्री कृष्ण अगेन। वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम तपः। जितने भी तपस्या करते हैं, ऑल सैक्रिफाइसेस किनके लिए हैं? भगवान श्री कृष्ण को की प्रसन्नता के लिए है। एकादशी व्रत रखते हैं, जो भी व्रत आप रखते हैं ये सब भगवान ही को अर्पण होता है, ठीक। तो वासुदेव परम तपः और परो धर्मो, topmost religion, वासुदेव परो धर्मो। topmost religion is given by भगवान श्री कृष्ण, द भागवत धर्म। हम धर्मम जो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही हमको ये धर्म दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। बाकी जो देगा क्या होगा? इट बिकम्स मैन मेड रिलीजन, भागवत धर्म। तो इसीलिए कहते हैं वासुदेव परो धर्मो। और अंत में वासुदेव परागति। गति का मतलब है द गोल, ना बड़े द टॉपमोस्ट गोल। जीवन में अलग अलग गोल्स रहते हैं ना, क्या है? शुरू होता है चलो कुछ धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, तो बाद में मोक्ष। आई वांट टू गेट मोक्ष। कहाँ जाना है? भगवान जी के, भगवान श्री कृष्ण के जाना है। सो ही इज द फाइनल गोल। तो यही है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही के लिए हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यस, ठीक है, ओके। सो अनदर कैटेगरी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ होम ऑफ फूल्स, ठीक है? फर्स्ट वाज दुष्कृति, नेक्स्ट वन अनदर कैटेगरी मेंशन इन दिस वर्स इज मूढ़। एंड शिवपाल लिखते हैं फूल नंबर 1। सब लोग कहते हैं बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1, प्रभुपाद होते हैं यहाँ पे फूल नंबर 1। So Prabhu ji बोले काफी film too was Hare Krishna. So this is to understand क्यों प्रभुपाद जी सब लिखे हैं। The Naradham is one who is low in the human scale.
कभी कहते हैं ना कैसा इंसान है लेको पाए को जिमुन में sama action plus qui animo ne pas attendre et na fa tan man criminel déroulé तो बहुत सी भी जिमुन का pas fait ça तो इनको कहते हैं नराधम is one who is low in the human scale lowest of mankind and maya paritya gyan refers to one whose knowledge is carried away by maya or illusion. Ça même c'est un grand intellectuel dans le monde ou un grand titre mais c'est moi qui je peux faire cette activité je peux servir de l'intelligence pour tuer le démon pour finir l'humanité pour mettre un certain problème pour que moi je ramasse plus casse. On peut donner l'exemple je connais plus que moi pour vous dire vaccin déjà là. Anyway so these are the another category. And finally we have asuram bhavam ashrita refers to those who are out and out atheist ban ki pa ko da bhagwan de pe na bon c'est bhagwan fait que pas nous autres ये भगवान comment भगवान जी कैसे दयालु है मैं ना जाए भगवान pas existé mais c'est moi quand il begin manger boire il begin soleil il begin tout cadeau il begin les puis il begin tout cadeau quand je fais ce compte tu as besoin payer tout cela tu as besoin retourner भगवान comment pas payer tout cela mais tu besoin ना भगवान को नहीं tout cela को सोची सा tu नहीं तो cadeau so the creator is there किसी ने बना के दिया है ना किसी मुफ्त में सबको मिल रहा है So although there are no disadvantages to surrendering unto the Father, people who are thus characterized never do it. Alors ça, il y a différents groupes là qui je la prépare d'expliquer. Je pas pour soumettre jamais. As a result, they are constantly punished by the agents of the Father. Alors papa là il y a différents agents. Qui ban agent qui n'a nous causé là déjà? Qui sont là? Maya Devi. Maya Devi is the agent of Bhagwan. और वो क्या करती है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रहेगा छाई वजह से भगवानी विभति दुर्गा इच्छा अनुरूप वशिष्ठेसा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. Again the Brahma Samhita in such श्लोक explique दुर्गा माता की रोल की लिए त्रिशूल लेकर क्या करती है. माँ के हाथ में त्रिशूल है ना. त्रिशूल से क्या करती है? कितने पीड़ा है इसलिए जनो आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक. Ça même représente Durga Mata sur Trishul là ça même pour gars piquer grand matin tantôt getting kicked là ça même ça वही है माता वही करती है क्योंकि अधिष्ठात्री देवी इस संसार का इस भूलोक का दुर्गा मैया है. उनका यही है देवी दुर्गा यही का उनका कार्य है यही करती है कि जो लोग दुष्कृति हैं जो नराधम हैं उनको सब उनको मिलता रहता है. So they have to be slapped. अब देखो caned and kicked severely and they have to suffer. So this is the category. They are always suffering. तो यहाँ हम लोग क्या दुख प्राप्त करने आए हैं? We have come here to suffer. Yes, we have come here to suffer. But will we suffer always? क्या करना चाहिए? Solution क्या है? यहाँ पे तो इसको दुखालय में शाश्वतम कहते हैं. You are going to get kicked here only. Devotee, no devotee, you get kicked. लगेगा. But what we have to do? Devotee क्या करता है? बोलेगा यहाँ से निकल के भागो. यहाँ से निकल के कहाँ जाना है? Back home, back to God. We have to go back to Krishna. तो कैसे जाएंगे? कैसे जाना है? भगवान जी क्या कहते हैं? कैसे आना है उनके पास? Only through bhakti. भक्त्यामाम अभिजानाति. सिर्फ भक्ति से आप लोग मेरे को जान सकते हैं और भक्ति द्वारा ही आप मेरे पास आ सकते हैं. And there is no other way. So we will have to suffer otherwise. So just as a father has to chastise his unruly boy, so material nature has to employ certain punishments. कभी बाप क्या करता है? Papa qui fait quand les enfants font mauvais garçon. Trappe un coup de oreille, tourne un coup. बेटा enfants là गया ils vont se crier ah il dit mal il y a une correction. तो यही करती है हमारी माया देवी. She is the agent to give us all this punishment. Ah oui non préféré mais elle n'a pas comprendre malheureusement. They are used to getting kicked. आदत सी हो गई है. लात खाने का आदत हो गई है उनको.
तो ना, यू हैव टू यूज अवर इंटेलिजेंस, निकलना है इसमें से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय में, चैप्टर 9, थोड़ा देख लेते हैं एंड वी विल कंक्लूड फॉर टुडे। चैप्टर 9, लेट्स गो टू चैप्टर 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। वी गो टू टेक्स्ट नंबर 3। टेक्स्ट नंबर 3 भगवान जी क्या कहते हैं? सो भगवान जी बताते हैं कि अशतधाना पुरुषा, जस्ट इफ यू गेट इट, 9:3 भगवद गीता चैप्टर 9 मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, टेक्स्ट नंबर 3। जिनके पास भगवद गीता है थोड़ा साथ में हम लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग को दिखा? अशतधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अपराप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि। आप लोगों को दिखा? साथ में पढ़ेंगे, बोलिए। अशतधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि। अच्छा, प्रभु जी will read the translation for everyone. Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. O Kokara and me, therefore they return to the path of birth and death in this material world. अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या भगवान जी बता रहे हैं। यदि आपको यहाँ से निकलना है तो क्या करना है? भगवान के बनाए हुए धर्म पर चलना है। यू हैव टू फॉलो द पाथ as given by भगवान श्री कृष्ण। But if you don't follow, if you don't have faith in this path, क्या होता है? We have to again come to this material world, and so we have to stay in this material world. मृत्यु संसार वर्तमणि। और यहाँ पर क्या होती है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे भवदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये आदि शंकराचार्य सुना रहे हैं अपने गीत, अपने जब गाते हैं भज गोविंदम में। क्या कहते हैं? पुनरपि जननम, बार बार हमको क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि मरणम, मरना पड़ेगा बार बार। पुनरपि जननी जठरे शयनम, माँ के गर्भ में जाके सोना पड़ेगा आपको 9 महीने। यदि इंसान का शरीर मिले तो, मनुष्य का नहीं तो पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। पर यू हैव टू स्टे इन द वूम ऑफ द मदर। उसके बाद क्या है? यह संसारे बहुत दुस्तार, ये संसार में बहुत दुख है। कृपया पारे पाही मुरारी, हे मुरारी, हे कृष्ण पार करो, निकालो यहाँ से। समझे आप लोग? तो यहाँ से निकलना है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। सो the father has to, so material nature has to impose certain punishments. So let's finish with this ये paragraph हम लोग कर लेते हैं। At the same time, nature is nourishing us by supplying food and other necessities. हाँ, तो प्रकृति हमको क्या देती है? खाना पीना सब मिल रहा है ना? हाँ, सब दे रही है हमको। Yes, so भगवान दे रहे हैं। Both processes are going on because we are sons of the wealthiest father of all. And Krishna is kind even though we do not surrender to him. देखो, भगवान पिता है ना, पापा सा। Allora, conta papala. Lipe donu, lipe nourrir, lipe manger, boire, lipe tout. Pareil, dans la case, on trouve une affaire gosse, pas autre cause que papa. Mais finalement, quand papa là, un jour, papou là, il peut hériter. Non, il peut hériter. Content pas content, il peut hériter. ठीक उसी तरह आप मानो ना मानो पर खाना पीना तो मिल रहा है ना। ये तो है भगवान जी का, यही उनका दया है। So and Krishna is kind even though we do not surrender unto him. Yet despite being furnished so well by the Father, the Duskriti still performs unsanctioned actions. Duskriti je faire une action qui parle. One is foolish if he persists in being punished. बार बार लात खाने से आदत हो जाती है। राइट, बट नॉट गुड। लात खाना बंद करो, ये बंद करना चाहिए। नहीं, कोई बोलते नहीं प्रभु जी लात खाते खाते आदत से हो गए, तो ठीक है, जितना लात लगी कुछ नहीं होता है। नो, यू हैव टू गेट आउट, यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस, निकलो यहाँ से। सो वन इज फुलिश इफ ही परसिस्ट इन बीइंग पनिश्ड, एंड वन इज लो ऑन द ह्यूमन स्केल इफ ही डज नॉट यूज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ टू अंडरस्टैंड कृष्णा। तो यदि इस शरीर को धारण करके हम लोग भगवान जी को नहीं जानते, नहीं समझते हैं, इट ऑल गोज वेस्ट। अपना ये जीवन जो है व्यर्थ निकल जाती है।
If a man does not use his life to reawaken the relationship he has with his real father, he is to be considered fallen in the human scale. Very simple. तो क्या करना है? भगवान जी के साथ संबंध. That's why reawaken the relationship. Relationship का मतलब क्या है? भगवान जी के साथ संबंध. तो आप मंदिर में आएंगे तो यहाँ पर आपको संबंध ज्ञान आपको दी जाएगी. और सिर्फ नहीं, संबंध ज्ञान के बाद आफ्टर दैट यू हैव अविधेय ज्ञान एंड देन प्रयोजन ज्ञान. ये क्या है? आप लोग आते रहिए सत्संग में, आप लोगों को पता चलेगा. हरे कृष्ण. जय गुरु श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जय गुरु श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे. हरि बोल. ओके, तो हम लोग नरसिंह भगवान जी के हम प्रार्थना करते हैं, साथ में गाएंगे. हरि बोल. ऋषि भक्त विघ्न विनाशन भक्त वत्सल श्री श्री लक्ष्मण सिंह देव भगवान की, तो भक्ति श्रोमणी श्रीला प्रहलाद महाराज की, गौर प्रेमानंदे. साथ में गाएंगे सब लोग साथ में. नमस्ते नरसिंह भगवान की, भक्त शिरोमणि श्रीला प्रहलाद महाराज की, आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो. हरे कृष्ण. Okay, thank you.